quick recap, we had plotted our own position, plotted the target position, plotted the target's course and speed vector, and joined this line, joined both the targets A and B. So then, keeping our compass at point D, opened it up equal to our engine distance for 1 hour and made this arc and got this point E. Eco delta is our CTS vector. Transferred it to point A, it gives my own ship track as well as the rendezvous position. So this is what we did yesterday. From the 1 hour vector, I can get my from the AC vector, I can get the total distance to be covered. If I divide it with my engine speed, I get the time to rendezvous. Time to rendezvous can also be obtained using the target speed. Okay, now I will discuss one more additional concept related to this plot. So rendezvous without current, एक छोटा सा concept और discuss करेंगे, and after that we will move on to rendezvous with current. So any doubt up to here, beta? Okay, great. So let's proceed ahead. Before we move out to our next concept, it is very important that we understand one more complication or one more concept which is involved in this diagram, which we made in the rendezvous problem without any current. So let's understand this one more concept here. Some of the questions could be based on this particular concept also. Now, beta, we have seen that other ships' course and speed was given to us, and we wanted to find out what course and speed should we maintain so that we rendezvous with the other ship. So we made this plot on the chart. Now, in this plot, the line AB which you see, this particular line which I have highlighted, this line is also known as the line of approach or the relative line of approach. Now, what do we mean by this? What I mean is that if you are looking at this target on a radar which is on a relative motion, the radar is on the relative motion, you will see this target moving on the radar screen along this particular line Bravo to Alpha, and ultimately it will be meeting with your ship when both of you reach at point C. So this Bravo to Alpha is the line of approach or the relative line of approach of the target ship towards you. Now let's try to understand a little different scenario. Let us say that for a particular ship, they have given you the course and distance being made good or being steered by the target ship. And they have also given you own ship course and distance. Now what they want you to find out is what should be the line of approach of the target towards you. So the question is changed a little bit. Till now what we have done is that the line of approach was known to us. If you want to make a rendezvous, the line of approach has to be passing from our position. So that target has to approach towards our position. That's why we joined B with A. But in a different scenario, if you have other ships' course and speed, you have own ships' course and speed, you can easily find out what will be the line of approach on which the other ship is moving. So let me give you an example. Let's say the other ship course and speed was this one only.
what we have mentioned here by vector Bravo delta. And let us say our ship course and speed was slightly different. It was not this one. So what was our course and speed? Let me mark it on the plot. Let us say the distance which we were covering in 1 hour, or our speed, was slightly higher. So our vector would be slightly bigger. This E point would not be here. The E point would be here. So what I have done is I have drawn the other ship course and speed vector, and where this vector has ended, that is at point D, I have drawn my ship's course and speed vector in reverse. These were the two items which were given to me, so I have plotted them following the same concept on my plot. Now, if I want to find out the line of approach of the other ship, how will the line of approach be? Now we can easily find out the line of approach if you join point B with echo and extend it. This is going to be the line of approach of the target ship. Once you have this line of approach known to you, you can also find the CPA and the TCPA very easily. बेटा up to here is clear? सर इसमें इनिशियल शिप ए की पोजीशन तो दी होगी ना सर फिर? हाँ बेटा, सर इसमें इनिशियल शिप ए की पोजीशन तो गिवन ही होगी ना सर? वन बाय वन बेटा. अब ये क्वेश्चन बेटा चेंज हो गया है. इस क्वेश्चन में हमें हमारी पोजीशन, दैट इज पॉइंट ए पोजीशन भी गिवन होगी, टारगेट पोजीशन पॉइंट बी की पोजीशन भी गिवन होगी, टारगेट कोर्स एंड स्पीड इज गिवन, ओन शिप कोर्स एंड स्पीड इज गिवन. तो सर बस वही उल्टा ही है ना, अपने पोजीशन से अपना सीटीएस मारो, उस पर इंजन स्पीड काटो, और उस पोजीशन से दूसरे जहाज का इंजन स्पीड काटो और रिवर्स उसको ज्वाइन कर दो, तो वो सीटीएस आ जाएगा. और दोनों को अपनी इनिशियल पॉइंट और उसका जो फाइनल पोजीशन है दोनों को ज्वाइन कर दो, तो वो लाइन ऑफ अप्रोच हो जाएगा. आई डिडंट गेट यू बेटा, आस्क अगेन. सॉरी सर, सॉरी माइक ऑफ. नहीं सर वही, तो इसमें अपनी इनिशियल पोजीशन गिवन होगी, राइट? यस गिवन. ठीक है सर, बस ठीक है सर, थैंक यू. ओके, और बताओ बेटा, somebody else also had doubt. इसमें सर डी से रख के इन लोग को कट करना है सर. आस्क अगेन बेटा, आई डिडंट गेट यू. सर इसमें डी पे रख के आर्क कट करना है क्या अपने शिप का? हाँ बेटा, इसमें आर्क कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें हमारा कोर्स और स्पीड दोनों दिया हुआ है. सो फ्रॉम डी यू कैन जस्ट ड्रॉ योर सीटीएस वेक्टर इन रिवर्स. ओके सर. तो सर ये ई जहाँ पे मिल रहा है, ये तो सर ई ऊपर नीचे भी हो सकता है कहीं पे? नहीं बेटा, हमारा कोर्स भी गिवन है, हमारी स्पीड भी गिवन है, तो ई ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता. ओके सर, ठीक है. ओके सर इस कंडीशन में दोनों पोजीशन पता होनी चाहिए ना? यस बेटा, बोथ द पोजीशंस विल बी गिवन टू अस. ओके सर. सर ये पॉइंट ई कैसे आया, एक बार बताओगे सर दोबारा? मेरा नेट बंद हो गया था. ओके, दोबारा से रिपीट कर दूं बेटा सारा एक बार? यस सर, एक बार कर दो. ओके, नॉट एन इशू, लेट्स रिपीट इट वंस अगेन. Before we move out to our next concept, it is very important that we understand one more complication or one more concept which is involved in this diagram, which we made in the rendezvous problem without any current. So let's understand this one more concept here. Some of the questions could be based on this particular concept also. Now, beta, we have seen that other ships' course and speed was given to us, and we wanted to find out what course and speed should we maintain so that we rendezvous with the other ship. So we made this plot on the chart. Now, in this plot, the line AB which you see,
this particular line which I have highlighted. This line is also known as the line of approach or the relative line of approach. Now, what do we mean by this? What I mean is that if you are looking at this target on a radar which is on a relative motion, the radar is on the relative motion, you will see this target moving on the radar screen along this particular line Bravo to Alpha, and ultimately it will be meeting with your ship when both of you reach at point C. So this Bravo to Alpha is the line of approach or the relative line of approach of the target ship towards you. Now let's try to understand a little different scenario. Beta, up to here is okay, line of approach? Yes sir, okay. Yes sir. Okay, all right. Now I'm changing the question. अब हम क्वेश्चन को बिल्कुल बदल रहे हैं. जो पहला क्वेश्चन था उसे मैं ऑल टुगेदर चेंज कर दूंगा. It is no more a rendezvous question now. It has become some other question. Okay, you can call it a radar plotting question or CPA TCPA kind of question. So अब क्वेश्चन में क्या चेंज आ गई है? क्वेश्चन में उन्होंने हमें टारगेट शिप का कोर्स एंड स्पीड भी दे दिया है और ओन शिप का कोर्स एंड स्पीड भी दे दिया है. ये दोनों हमें दिए हुए हैं, बोथ आर गिवन टू अस. सो हमें फाइंड आउट नहीं करना है व्हाट कोर्स शुड वी स्टीयर, और हमें रेंडेवू भी नहीं करना है. They have given us the target course and speed. They have also given us the own ship course and speed. हमें अब line of approach को ढूंढना है. So this is how the question is changed. So अब हम देखेंगे कि with these two given to us, that is Bravo Delta is given and Delta Echo is given, हम ये line of approach कैसे बनाएंगे? Let us say that for a particular ship, they have given you the course and distance being made good or being steered by the target ship. And they have also given you own ship course and distance. Now, what they want you to find out is what should be the line of approach of the target towards you. So the question is changed a little bit. Till now, what we have done is that the line of approach was known to us. If you want to make a rendezvous, the line of approach has to be passing from our position. So that target has to approach towards our position. That's why we joined B with A. But in a different scenario, if you have other ships course and speed, you have own ships course and speed, you can easily find out what will be the line of approach on which the other ship is moving. So let me give you an example. Let's say the other ship course and speed was this one only, what we have mentioned here by vector Bravo Delta. And let us say our ship course and speed was slightly different. It was not this one. So what was our course and speed? Let me mark it on the plot. Let us say the distance which we were covering in 1 hour or our speed was slightly higher. So our vector would be slightly bigger. This E point would not be here. The E point would be here. So what I have done is I have drawn the other ship course and speed vector, and where this vector has ended, that is at point D, I have drawn my ship's course and speed vector in reverse. These were the two items which were given to me, so I have plotted them following the same concept on my plot. Now, if I want to find out the line of approach of the other ship, how will the line of approach be? Now we can easily find out the line of approach if you join point B with echo and extend it. This is going to be the line of approach of the target ship. Once you have this line of approach known to you,
You can also find the CPA and the TCPA very easily. So is up to here, is it clear now beta? यस सर. सर ये ई पॉइंट अंदर भी आ सकता है द ग्रीन लाइट के राइट साइड, अगर स्पीड कम होगी तो अपनी. यस बेटा बिल्कुल आ सकता है. सर ये सीपीए और टीसीपीए ये डिस्टेंस ही है ना, ए और ई लाइन जो एक्सटेंड है उसके दोनों में जो डिफरेंस है, दैट इज राइट. अभी 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 बताएंगे बेटा, सीपीए हाँ जी. टीसीपीए अभी निकालेंगे. ओके, क्योंकि सर वही डिफरेंस ही आ रहा है ना, बस पहले तो वो एक लाइन पे ही आ रहे थे दोनों, अभी ये दोनों डिफरेंस पे आ रहे हैं. राइट, रेंडेवू में सीपीए 0 था, अब हाँ सीपीए तो 0 अभी, नहीं है, सो हाँ वी तो विल इसमें फाइंड लाइन आउट. ऑफ ये डिफरेंस है. हाँ जी. यस. ओके. और एज यू सेड बेटा, इको पॉइंट जो है इट कैन बी इनसाइड द ट्रायंगल ऑल्सो. अगर हमारी स्पीड कम हो तो ये ट्रायंगल के अंदर भी जा सकता है, दैट्स पॉसिबल. ओके, और कोई डाउट बेटा? ओके, सो शैल वी मूव अहेड देन? How do we find the CPA? Yes, sir. In this case, the ships are not meeting up. There is no more a rendezvous question now. It is basically radar plotting being done on the chart. So once you have this line of approach made on the chart, you can find out the CPA and TCPA. How can we do that? From your ship position, that is point A, drop a perpendicular to this line of approach. I've just made that perpendicular on the chart. Let's say this is point F. So from A, I have dropped a perpendicular onto the line of approach, and this meets the line of approach at point F. So can you draw this perpendicular beta? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Very good. So this point F is the point where both the ships will be closest to each other. If you measure this distance alpha to Foxtrot AF, it will give you the CPA. So this distance A to F will give you the CPA, and you can also find out the time for CPA. Now this triangle which we made, Bravo, Delta, Eco, is a 1 hour triangle. So in 1 hour, the target ship is going to move from B. It is going to approach towards my ship, and it will at Eco point. So this is the speed of approach. So we can easily find TCPA now. You measure Bravo to Foxtrot BF and then divide it by your speed of approach, that is Bravo Eco, and it will give you the time to closest point, or TCPA. So we can find out the CPA and TCPA using this method. So there is a slight difference in approach. In the rendezvous question, line of approach is known to us. We know the CPA has to be 0, so the line of approach is exactly passing from our position. The target course and speed is known to us. These two were known. Let me mark it. This was known to us. The line of approach was known to us. What we were finding was this one. That is own ship's course and speed. Now, in this second concept which I have told you, the scenario changes a little bit. What we have is, we have the other ship's course and speed given to us. We have the own ship course and speed given to us. And what we want to find is the line of approach now. So when you plot these two, first you plot other ship's course and speed, Bravo Delta. Then you plot your ship's course and speed in the reverse direction from Delta point. And this point Eco which you get, if you join Bravo to Eco, this gives you the line of approach, which gives us the CPA and TCPA. So this is the extra concept which you should have in your mind and use it if required.
I think there is one or two odd questions which have come in the papers related to this concept. One more thing which it tells you, if you look carefully, if the target ship is going to approach on this line, Bravo to Foxtrot, you see the target ship will be passing astern of you. Okay, if the line of approach was passing from our bow, see our ship is steering this particular course. So if the line of approach was passing ahead of us, so then the other ship will be crossing from our bow. But in this particular case, the line of approach is passing behind us. So the ship will be crossing from our stern. Or in other words, our ship will be crossing ahead of the target ship. Our ship will be crossing from the target ship's bow, and the target ship will be crossing from our stern. That also can be seen as we draw this line of approach on the chart. Okay, so beta, have a good look at the plot and let me know your doubts now one by one. सर ये परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ करेंगे या एफ से सीपीए के लिए सर? बेटा ये परपेंडिकुलर ए से ड्रॉप होगा और ये एफ पॉइंट तक जाएगा. तो सर ए पे आएगा ना परपेंडिकुलर 90 डिग्री, आपने एफ पे 90 डिग्री लिखा हो. नहीं बेटा, 90 डिग्री will be at F. 90 degree will not be at A beta, it will be at F. सर इस केस में सीपीए जो होगा एफ एंड ए होगा ना डिस्टेंस. That's right. तो सर AF. ये ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू स्केल व्हिच वी आर यूजिंग, सर ये वैल्यू हम लोग कैसे चेंज करेंगे? लाइक डायरेक्टली तो हम लोग ये नहीं होगा ना डायरेक्टली. Ask again बेटा. सर विद रिस्पेक्ट टू स्केल हम लोग जो यूज कर रहे हैं, स्केल मतलब अगर हम लोग की वैल्यूज अलग-अलग है तो ये डिस्टेंस उस हिसाब से हम लोग को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज या फिर ये डायरेक्टली यही डिस्टेंस हमारा सीपीए है. ओके बेटा, देखो बेटा, अगर तो आप इसे चार्ट पे ही प्लॉट कर रहे हो जैसा अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिर तो ये डिस्टेंस सीधा सीधा लैटिट्यूड स्केल से हम मेजर कर लेंगे, राइट? ओके. अगर आप इसे चार्ट पे प्लॉट नहीं कर सकते, जो स्पेशल केस हमने किया था, maybe because the positions are not given on the chart or the distances are too big, cannot be plotted on the chart, तो ऐसे केस में हम इसे अपनी आंसर शीट में अगर प्लॉट कर रहे हैं तो एज पर आवर स्केल हम ये डिस्टेंस को नॉटिकल माइल्स में कन्वर्ट कर लेंगे. लेट अस से AF कम्स टू 2 सेंटीमीटर और हमारा जो स्केल है वो है 1:10, then 2 centimeter becomes 20 nautical mile. So CPA would be 20 miles in that case. ओके सर, ओके. एंड सर TCPA है B से लेके F तक, तो BE इज 1 आवर डिस्टेंस और फिर यहाँ से E से F हम लोग मेजर कर लेंगे तो 1.2 समथिंग हो गया ना सर? हाँ बेटा, don't measure E to F. What you do is you measure Bravo to Foxtrot. ये टोटल डिस्टेंस आ गया आपके पास and divide it by Bravo Eco. Bravo Eco स्पीड हो गई आपकी. Then it will give you the total time to reach to your CPA. ओके सर. Sir, we will divide by Bravo eco, not by Delta eco. Not by For Delta TCPA? Eco बेटा, क्योंकि जो ब्रेवो फॉक्सट्रॉट है ना वो अप्रोच डिस्टेंस है, तो उसे स्पीड ऑफ अप्रोच Yes, sir. से ही डिवाइड करना पड़ेगा. स्पीड ऑफ अप्रोच इज Okay. ब्रेवो इको. Okay, sir. Okay. डेल्टा इको तो हमारी स्पीड है. ठीक है सर. ओके, सर एक बात पूछनी थी सर. बोलो बेटा. सर ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, BF एक कोर्स आएगा विद रिस्पेक्ट टू उसके करेंगे या BA ए के विद रिस्पेक्ट करेंगे? ओके बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, देखो बेटा, ये जो लाइन आ गई ना हमारे पास, ब्रेवो इको फॉक्सट्रॉट, ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज द लाइन ऑफ अप्रोच ऑफ द टारगेट शिप. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने शिप को ए पोजीशन पे फिक्स्ड मान लेता हूँ, लेट अस से माय पोजीशन इज फिक्स्ड हियर, जैसा कि रिलेटिव मोशन मोड में रडार पे होता है, हमारी पोजीशन रडार के सेंटर में फिक्स होती है,
तो जो ये टारगेट शिप ब्रेवो है इस रेड कलर की लाइन पे हमें चलता हुआ दिखाई देगा. इट विल बी अप्रोचिंग आवर शिप ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. अब बेटा इस लाइन पे चलते हुए कैन यू टेल मी विच इज द पॉइंट व्हेन दिस शिप टारगेट शिप विल बी क्लोजेस्ट टू अस? सर फिर तो वो रिलेटिव लाइन पे चल रहा है, चाहे आप सेंटर के विद रिस्पेक्ट ले लो या लाइन के विद रिस्पेक्ट ले लो, दोनों पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा ना सर. नहीं बेटा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी गो टू पीडीएफ. ओके, अब देखो बेटा जो ये ब्रेवो शिप है ये इस रेड कलर की लाइन पे चल रहा है, करेक्ट? सो Yes. आफ्टर सम टाइम इट विल रीच अप टू हियर, आफ्टर हाफ एन आवर इट विल रीच हियर, आफ्टर 45 minutes it will reach here, after 1 hour it is going to reach here and so on. Okay, अब बेटा ये चलता चलता यहाँ पे पहुँच गया. लेट अस से इफ़ यू measure the distance between the target ship and our ship, तो ये डिस्टेंस आता है. जब ये यहाँ पहुँचेगा द डिस्टेंस वुड बी दिस वन. जब ये एफ पॉइंट पे पहुँचेगा डिस्टेंस वुड बी ए एफ, और जब ये एफ पॉइंट से आगे चला जाएगा द डिस्टेंस वुड बी दिस वन. राइट, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो मैंने ड्रॉ किए हैं इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये एफ आ रहा है बेटा. नहीं सर वो तो एग्री कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पर अगर ए से ड्रॉ परपेंडिकुलर करेंगे वो डिफरेंट आएगा अगर एफ से ड्रॉ करेंगे तो सर. ओके, लेट मी इरेज एंड ट्राई टू सी व्हाट यू आर सेइंग. आप बोल रहे हो बेटा कि मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ? यस विद रिस्पेक्ट टू हमारा बी ए भी एक कोर्स है और बी एफ भी एक कोर्स है सर. ओके, दोनों पे okay, let's zoom in and make it little more clear. आप बोल रहे हो that we drop a perpendicular like this, करेक्ट बेटा? अब इसमें दिक्कत ये है बेटा कि टारगेट शिप तो एफ पे है, दैट इज ओके, बट आवर शिप इज नॉट एट एक्स, आवर शिप इज एट ए. तो एफ एक्स will not give us the distance between the two ships. Relative motion में है ना बेटा, our ship is not moving, our ship is staying at A. Did you understand it बेटा? हाँ समझा सर. So you cannot drop a perpendicular from F to the green line. ये ग्रीन लाइन तो अब कहीं सिचुएटेड ही नहीं है. ये ग्रीन लाइन तो उस केस में थी जब हम रेंडेवू कर रहे थे. अब तो ये ग्रीन लाइन हमारे प्लॉट में आएगी ही नहीं बेटा. इज इट क्लियर बेटा? क्लियर सर. यस सर. ओके, और बताओ बेटा, और कोई डाउट आ रहा है?
सोचो और सोचो, अगर और कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो अब ये जो टारगेट शिप है ये हमारी स्टर्न से पास कर रहा है, राइट? Yes, sir. Our ship is moving in this particular fashion and the target ship is passing from our stern. अगर मैं अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दूं, लेट अस से मैंने अपनी स्पीड, माय स्पीड वाज 15 नॉट्स, मैंने रिड्यूस कर दिया टू 10 नॉट्स। अगर मैं अपनी स्पीड को रिड्यूस करूंगा तो ये जो डेल्टा इको वेक्टर है ये छोटा हो जाएगा, इट विल बी अप टू सम पॉइंट समवेयर हियर, सो इको पॉइंट यहाँ आ जाएगा अगर मैं अपनी स्पीड कम कर देता हूँ, राइट बेटा? Yes, sir. कोलिजन कोर्स पे चले गए। हाँ जी सर। एंड इन दैट केस जो लाइन ऑफ अप्रोच है वो ऐसे हो जाएगी, यू सी मैंने अपनी स्पीड जैसे ही कम की वो टारगेट जो है अब मेरे बाहु के आगे से क्रॉस कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट अगर आप इसको समझ गए हो तो सारी की सारी रडार प्लॉटिंग भी समझ गए हो बेटा। सर नहीं, वो जो हाई लेवल की होती है वो फिर उसमें डिफिकल्टी हो जाती है ना सर, रडार प्लॉटिंग। ऐसे ओ ई वाली ट्रायंगल तो समझ जाते हैं सर, बाद में ही बस पंगा बेटा अब हाई लेवल में नहीं जाना है हमने, अब इसको छोड़ दो। ये मैंने सिर्फ आपको ना थोड़ा बहुत फंडामेंटल ज्ञान जो है एक्स्ट्रा दिया था, कभी दिक्कत पड़े तो ये काम में आ सकता है। sometime you may get a bouncer kind of question in your paper। जहाँ तक मुझे याद आता है बेटा बहुत साल पहले, शायद 7-8 साल पहले ऐसा एक सवाल एमएमडी के पेपर में आया था, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अदरवाइज यूजुअली ये कॉन्सेप्ट पेपर में यूज नहीं होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक बार आप इसे अपने माइंड में डाल लो और उसके बाद इसको भूल जाओ, ओके? क्योंकि अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ी है ना, तो वो जो रिजर्व पावर होती है ना, वीडियो गेम में समटाइम यू हैव रिजर्व पावर, एक आधी लाइफ बची होती है उसको यूज़ कर लेते हैं, तो ये आपके पास वैसा एक ना रिजर्व है बैलेंस में विच यू कैन यूज इफ यू गेट स्टक। ओके सर। ओके, सो अब आगे प्रोसीड करें बेटा। Yes, sir. 12:13, shall we move on to rendezvous with current now? Yes, sir. Okay, great. Let's move on to the second type of rendezvous problem now. This is rendezvous with current. So the entire question remains the same with only one difference, that there is a current acting in the area, present in the area, which is affecting the other ship, target ship, as well as our own ship. Now this makes the question a little interesting. So let's see how do we solve. Now initially you have to follow exactly the same procedure which was done without current, which we have seen earlier, and we have to find out the point C. So let's quickly follow that procedure once again on the chart. We first draw the own ship, we first plot the own ship position on the chart represented by point A. We plot the target ship position on the chart, name it as point B. Now we draw a line joining both the positions. Then we draw the target ship course steered line. This is the course which the target ship is steering. Now we cut off the target ship course to steer vector for 1 hour. So we have drawn this arc, name this as point D. Now from point D, we draw an arc
equal to the distance covered by own ship in 1 hour, and you can see that arc here on the plot. Name it as point E. Now we join eco delta, and this eco delta gives us the own ship course to steer vector for 1 hour. Now we transfer this line eco delta to point A, and this meets up with the target of other ship at this particular point. So this line which we have drawn meets up with the course line of the target ship at this particular point. Let's name it as C. Now this is what we had done in Rendezvous. Are you not able to hear, beta? Sir, now is okay, sir. So we have followed the same procedure and found out this point C. Is the sound coming now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the difference here is this point C is not our rendezvous point. Our rendezvous point is going to be somewhere else. Reason, we have current prevalent in the area, and the current is going to affect the target ship as well as our own ship. So what we do now is we also find out the time to rendezvous, exactly as we did in the previous question. That is, you can measure distance AC and divide it by engine speed of own ship, or the second option is you can measure distance BC and divide it by the engine speed of the target ship. Now once we have the time to rendezvous, now we can involve the current in our plot. Once we have the time for us, we need to calculate what is the drift of the current for that particular time. Let us say, let's assume for making the question simple, that our rendezvous time comes to 3 hours. From this triangle ABC, the rendezvous time comes to 3 hours. So we are given the set end rate of the current. We find out what is the drift of the current in the 3-hour period. Now, once you find out the drift, we apply this current vector to point C. So I'm going to apply the current vector now to point C. The direction of this current vector is the set of the current, which is given in the question. And the length of this vector is the drift of the current in 3 hours, or in the duration what we calculated as time to rendezvous. Now current is represented, current vector is represented by 3 arrows. So let's plot the 3 arrows here. We have these 3 arrows showing this current vector. Now wherever this current vector is ending, let's name that as point F. So we have this point F on our chart. This point F, which we have found, is our rendezvous position now in this particular question. So we have obtained our rendezvous position. Let's now try to understand how this position F became our rendezvous position. For this, let's join point A, which represents our ship starting position, with this point F. Let's join them. So we have this line AF Alpha Foxtrot on the chart.
Now this line AF is basically the course made good by ownership. This is the course made good vector. Now if you look carefully, the blue color vector here, alpha Charlie, it is our course steered vector. This is the course which we are steering. If you remember, this eco delta vector was obtained using our engine distance. So this alpha Charlie is our course steered vector. Charlie to Foxtrot, the red color vector, is the current vector, and we know the resultant of course to steer vector, that is the blue vector, and the current vector, which is the red vector, is the CMG vector. So the green color vector alpha to Foxtrot, which you see here, is our course made good vector. Similarly, if you join Bravo to Foxtrot, B to F, let's join it. So we have this line Bravo Foxtrot here on the plot. Now this line Bravo Foxtrot is basically the course made good by the target ship. If you remember, Bravo Delta was the course steered by the target ship. So this is extended up to Charlie, up to C point. So Bravo to Charlie is the course to steer vector for this duration of 3 hours. Charlie to Foxtrot is the current vector for the same duration. And Bravo to Foxtrot, the green color vector which you see, is the course made good vector of the target ship. So you obtain the rendezvous position. We can read out the latitude and longitude from here. We can read out this alpha Foxtrot vector. The direction of this vector will give us the course made good by other ship. And if you read the blue color vector here, the direction of the blue color vector here, either alpha Charlie or eco delta, both are lying in the same direction. It will give you the course to steer for rendezvous. Now, if you want to obtain time to rendezvous, whatever time you had calculated earlier, that time is going to remain the same. There will be no difference at all, because this triangle alpha Charlie Foxtrot is basically for the same duration which we had calculated earlier. We had found out the time to rendezvous using our course to steer vector and engine speed. So the time to rendezvous remains the same. There is no change in the time to rendezvous. Okay, so beta have a good look at the plot and let me know your doubts. सर ये उस कंडीशन में जब करंट दोनों शिप पे सेम लग रहा है, करेक्ट? That's right, beta. That's right. ओके. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये करेंगे ना कि लाइन ये ई तक तो काट दिया, उसके बाद जो सी पॉइंट है उस पे एक करंट लगा देंगे. Right, beta. That's right. और फिर बी और सी जो बी से है वो एफ वाले पॉइंट को जोड़ देंगे, इधर ए से एफ वाले पॉइंट को जोड़ देंगे, लाइक दैट. Right, that's right. सर अगर जो सीकेएस है, जो सीकेएस रहेगा, तो आपने इसमें अलाउिंग किया है 1 घंटे के लिए करंट को, बेसिकली जितनी देर के लिए उतने का ही करंट आगे खींचा है, पर हमको ये डिस्टेंस नहीं पता ना. जैसे फॉर दी एग्जांपल 1 घंटे का ही हमें पता है, बी से डी और बी से ई पता है, पर आगे की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी उस ट्रायंगल के लिए, लाइक दैट. नहीं बेटा, I didn't get your question. Can you repeat? सर दोनों पे जो करंट लग रहा है वो कॉमन पॉइंट से लग रहा है सी से. That's right. जो वेसल की स्पीड है और सेकंड वेसल की स्पीड है, तो इसमें पहले हमें
ये जो दोनों तरफ ए से सी है और बी से सी है, इतना स्पीड निकालना पड़ेगा ना जहाज का इतने टाइम का, कि इतने टाइम में इतना है, क्योंकि ये सी का पोजीशन उस हिसाब से तो खींचेंगे। हाँ बेटा, सी का पोजीशन खींचने के लिए तो कुछ नहीं निकालना पड़ेगा क्यों सर, आपने जैसे। रेट लगाना पड़ेगा ना करंट का। नो बेटा, सी वॉज ऑब्टेन्ड विदाउट करंट। सी पॉइंट तक हमने बिल्कुल वैसे ही किया है एज इफ देयर इज नो करंट इन द एरिया। हाँ सर, सी पे के बाद सी एफ निकालने के लिए सी एफ के लिए तो आपको ये ओके निकालना पड़ेगा ना, ओके, बी आई सी टेल यू, और। होल्ड ऑन नाउ। जब आपने ये सी एफ वेक्टर करंट वेक्टर अप्लाई करना है, हाँ। उसकी डायरेक्शन तो आपको पता है कितनी है, पर हम्म, उसकी लेंथ कितनी रखनी है ये कैसे पता चलेगा? हम्म, इसके लिए आपने टाइम टू रेंडेवू निकालना है कंसिडरिंग देयर इज नो करंट एट ऑल। जैसे हमने विदाउट करंट टाइम टू रेंडेवू निकाला था, एग्जैक्टली वैसे ही हम यहाँ पर भी टाइम टू रेंडेवू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आई विल टेल यू नाउ। आप मैयर करोगे अल्फा टू चार्ली, ठीक है। अल्फा टू चार्ली आप मैयर करोगे, दैट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल इंजन डिस्टेंस विच वी हैव टू कवर, और इसे डिवाइड कर दोगे विद योर इंजन स्पीड। इंजन स्पीड है हमारी इको डेल्टा। इंजन स्पीड तो दी भी होती है ना वेसल की, तो वैसे भी। हाँ बेटा, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट इज इक्वल टू इको डेल्टा। ठीक है। So you divide alpha Charlie by your engine speed, it gives you the time to rendezvous। जैसे हमने time to rendezvous बिना करंट के निकाला था, जितना वो टाइम आएगा आपका करंट वेक्टर उतने ही टाइम के लिए लगेगा। ठीक है सर, ठीक है। और इसको वाइस वर्सा करके, जैसे अपने के पास अदर शिप का सीटीएस और वो दे रखा था टाइम, जैसे 1 आवर में स्पीड दे रखी है, तो उससे भी तो कर सकते हैं बीसी मेजर करके वैसे। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, यू कैन डू इट विद अदर शिप ऑल्सो। दैट मीन्स ब्रेवो चार्ली डिवाइडेड बाय ब्रेवो डेल्टा, इट विल ऑल्सो गिव यू द सेम टाइम टू रेंडेवू। इतने ही टाइम के लिए करंट को अप्लाई करना है। ठीक है, तो सर पोजीशन चेंज होके एफ हो जाएगी फिर एनजीओ की। सिर्फ रेंडेवू पोजीशन में चेंज आएगा, टाइम टू रेंडेवू जो विदाउट करंट था वही रहेगा, रेंडेवू पोजीशन इज गोइंग टू चेंज टू एफ। ओके सर। फिर टाइम सेम कैसे रह सर सकता है कि करंट लग रहा है तो? टाइम सेम ऐसे रहेगा बेटा, अगर करंट नहीं होता तो आप तो अल्फा टू चार्ली जाते, टारगेट शिप ब्रेवो टू चार्ली ही जाता। अब चार्ली टू फॉक्सट्रॉट जो आप चल रहे हो आगे, वो तो करंट आपको लेके गया है ना। पर डिस्टेंस बढ़ा ना। नहीं बेटा, डिस्टेंस मेड गुड बढ़ा है, तो हाँ। आपकी स्पीड मेड गुड भी तो बढ़ गई है उतनी, अच्छा, हाँ ठीक है सर। राइट? हाँ। ओके, और बताओ बेटा, और डाउट्स बताओ। सर अगर सिर्फ करंट हमारी जगह पे एक्ट कर रहा है, उसकी जगह पे नहीं एक्ट कर रहा तो? ओके, दैट मीन्स देयर इज डिफरेंट करंट इन द टारगेट लोकेशन एंड आवर लोकेशन, राइट? सर मान लेते हैं कि उसके शिप पे कोई मतलब एरिया पे कोई करंट नहीं, हमारे पे करंट ही है बस। ओके, दैट मेक्स द क्वेश्चन मोर इंटरेस्टिंग। सो उसको हम करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है सर, ओके। ओके, इसमें अगर और कोई डाउट है तो पूछो बेटा। ओके, सो ऑल क्लियर? हाँ जी सर। ग्रेट। ठीक है बेटा, सो फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं, एंड ब्रेक के बाद वी हैव ए इंटरेस्टिंग टॉपिक, that is different current at the target location and our location। इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट अगर आ जाए तो कैसे करना है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए बाउंसर क्वेश्चन बाय द कैंडिडेट्स। ओके, सो व्हाट टाइम यू विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक? सर 15 मिनट्स। ओके बेटा, सो बी बैक एट 45। ओके सर।